और It is quite. मतलब मुझे तुम लोग को क्या लग रहा है लास्ट वीक में सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा तुम लोगों के हिसाब? I think this द शॉकिंग सबसे इंटरेस्टिंग तो नहीं, सबसे शॉकिंग अगर आप मेरे से पूछोगे तो हैदराबाद वर्सेस दिल्ली. I never expected Delhi to beat Hyderabad by 7 wickets. It was unreal. Nobody could have predicted that result. Why? See, I'll tell you, Sunrisers Hyderabad, na, in my view, is one of the most balanced teams in this tournament currently. Their batting is doing all right. They're getting runs. Their bowling is not doing that well. They're not able to get wickets. And second thing that I have noticed in this IPL is that Kagiso Rabada once said that you should rename it as batting, not cricket, the game, because frankly we are just there to act as bowling machines. That is not happening. Teams are getting 200 scores regularly, but bowlers have their say. I mean, it's more a case of bowlers restricting them to a lower total, a lesser big total, but bowlers do have their say, and pitches are not playing in a way that they're only spinners or only pacers are doing well. It's been a sort of balanced thing. Spinners have done well, pacers have done well too. I think that kind of a thing has been there. It's not been a particular trend. Everybody's had their say, sort of. But SRH, na, their pace attack, their bowling is they're struggling to take wickets. That is the problem. They're not going to win matches by outscoring the opposition. That is what it is. हाँ Nobody's going मतलब to do that मुझे for them. भी ये लगा कि मुझे मुझे थोड़ा सा ये लगा इसमें एसआरएच का खास करके जो कल वाला मैच था किसके अगेंस्ट था वो कल वाला मैच एसआरएच का दिल्ली के अगेंस्ट राइट Delhi तो Kings, correct. Delhi is also in my opinion it is also one of the stronger teams this IPL but what is happening is SRH first of all in a T20 match if you can't play your full 20 overs then it's a big reason Yeah, to worry because एक ही correct, correct. स्टाइल में एक ही गियर में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते अगर आप 280 रन बनाते हो किसी दिन तो किसी दिन 220 या 200 रन भी विनिंग टोटल हो सकता है my problem yesterday was they left out those 8 balls and if you saw the Delhi scoring it was going very much in parallel with SRH scoring तो वहां पे अगर 10 15 20 रन और होते या उन्होंने 20 ओवर खेल लिए होते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था और मुझे ये भी लग रहा है जैसे अनुभव ने कहा कि in spite of having a Pat Cummins, Mohammad Shami, Adam Zampa, Harshal Patel, they are not being able to क्या कहते हैं उसको defend totals, which is a slight concern for me. Though there is still a lot of time for SRH to cover some lost ground. बट यार ये तो नहीं होना चाहिए कि आप इतने ही बैटिंग पे रिलायंट हो के हर बार आपको 250, 260, 280 बनेगा वो तो होने नहीं Correct. वाला और ये और इस मैच में पर्टिकुलरली मुझे ये भी लग रहा है कि आई वुडंट blame SRH completely because it was a standout bowling performance by Starc. ये टूर्नामेंट का पहला 5 विकेट हॉल भी था मिचेल स्टार्क का राइट सो इट वाज मोर ऑफ अ आई मीन he did a lot better right and that also was one of the reasons why SRH did not play so well so maybe I'll not put entire blame on SRH but rather praise you know Stark for his bowling. So my counter to that is Gaurav that even England in Test cricket has played their cricket in a certain way, and they've been very adamant on only that one style of batting. So one is it takes away the element of unpredictability from the team. Uh, Secondly, what it does is that there is nobody when a bowler is going through the spell, then you sometimes have to adapt. You have to like give it to the bowler save your wickets and then score otherwise like all these batsmen are capable of scoring at 15 runs per over so मेरा कहने का मतलब ये है लेकिन उसमें से कोई एक एक या दो बैटर उनको ऐसे चाहिए जो लगभग 20वें ओवर तक मैच लेके जाए आपने कल इसको एक और ऑलराउंडर है वियान मुडलर उसको आप लेके आए एज इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बिकॉज यू हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ विकेट्स एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग एडम जाम्पा नाउ it was a pitch that was favoring spin also और आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी एडम जाम्पा को एज अ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट लाने की बिकॉज your top order batted in a certain way and all of them got out and then still you couldn't bat 20 overs
तो आपकी बैटिंग करेक्ट। अगर नंबर 9 तक जा रही है तो आप कैसे 20 ओवर नहीं खेलोगे? ये थोड़ा-सा मेरी समझ के बाहर है और थोड़ा-सा नहीं, कभी-कभी आई ट्रेडिशनल एग्री। क्रिकेट पे एक आना एक चाहिए। एक एक पैरेलल अगर मैं और ड्रॉ कर पाऊँ, तो यू सी दिस टीम हैज जस्ट यू नो गॉट फॉर्म्ड। अभी क्या होता है कि हम एक सर्टेन काइंड ऑफ क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा खेलते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ क्रिकेट आजकल, राइट? Hmm. वनडे में, T20 में, irrespective of the pitch, irrespective of the opposition, right? He would play a certain kind of cricket, and he believes that it is important for him to give that kind of a start to the team. But उसके बाद हर every down the bat, somebody who is gonna come after the fall of every wicket, they have a very specific role assigned to them, and they know that if the game slips away, then they have to play a different kind of role. वो एक वो वो एक अंडरस्टैंडिंग आता है व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ यूनिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेन यू हैव असाइन्ड रोल, राइट? आई थिंक एसआरएच के साथ ये चैलेंज हो रहा है कि they, because of their batting lineup, they are going to play that brand of cricket, but unfortunately it's a new team. सो वो कोहेजन जो है टीम का, वो अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच बैट्समैन, कि अगर इफ द सिचुएशन इज नॉट इन योर फेवर, राइट, देन हाउ डू यू टर्न अराउंड, हाउ डू यू स्विच योर गियर, हाउ डू यू स्विच योर रोल। वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग शायद आनी उनमें अभी बची हुई है। मे बी फर्दर डाउन द टूर्नामेंट वी कैन सी समथिंग लाइक दैट। थोड़ा-सा मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है मतलब कहने की बात ये भी है कि एसआरएच का जो बैटिंग का कोर है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, ये तो अभी 1-2 साल से साथ में खेल रहे हैं मतलब दे रीच्ड द फाइनल्स लास्ट ईयर। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन गैप होगा। इट्स जस्ट दैट they are committed to a certain style of cricket, so when it comes off, they are going to score 300 runs or 280 runs. But then if it doesn't come off, then what do you do? Can you still salvage a 220? And then can your bowling defend a 220? Because both the times they failed in defending the score. And लखनऊ में भी तुम देखो तो by far it was Nicholas Puran in the Lucknow match who just went on a different gear like SRH does. So Nicholas Puran did to SRH what SRH does to other teams. एंड उसके अलावा फिर देखो निकोलस पूरन आउट हुआ तो वापस 2-3 विकेट्स फटाफट गिरी। तुम्हारे ऋषभ पंत आउट हो गए, तुम्हारे 1-2 बैट्समैन और आउट हो गए, मिचेल मार्श आउट हो गए। तो इट इज इट इज आल्सो अबाउट फिगरिंग आउट अ वे टू टेक विकेट्स एंड मेकिंग श्योर दैट आप प्रेशर बनाए रखो विकेट्स लेके। तो वो मुझे एसआरएच की बॉलिंग में भी वो एक प्रॉब्लम दिखी कि यार दे वर नॉट लाइक लाइक अनुभव सेट के थोड़ा-सा बॉलिंग भी कंसर्न है कि 190 मतलब इतना आसान स्कोर भी नहीं है जितना दिल्ली ने बना दिया या लखनऊ ने जितनी सफाई से वो मैच जीत दिया इतना इजी स्कोर भी नहीं है वो भले हम एक रेपुटेशन आती है एसआरएच के साथ आजकल तो हम फिर सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा रन बनाएंगे तो हम लोग कम होता है बट 190 इज डेफिनेटली अ डिसेंट स्कोर